we're going to talk about oxidation of alcohols. Okay, that is what we were dealing with, oxidation of alcohols. Oxidation जो word है पहले तो उसका मतलब what does that word actually, what does it mean? So that is what we have already studied. We've studied कि it means oxidation means क्या क्या loss of electrons. ठीक है, that is what is meant by oxidation mainly. When something loses electrons, so there's an increase in oxidation state. The charge increases. And then I also mentioned two techniques for figuring out whether oxidation or reduction is happening, and that is oxidation is also referred to as gain of oxygen. And I told you okay, it's not always true. Gain of oxygen, or there's another definition which is loss of hydrogen. ये मैंने करके भी आपको दिखाया था. Gain of oxygen atoms or loss of hydrogen atoms. ठीक है, that is also referred to as oxidation. ठीक है, you can calculate the oxidation state and you can figure out whether oxidation is happening or not. Now we're talking about oxidation of alcohol. It's a simple reaction that you need to remember, and that is that if you have an alcohol, any alcohol, and you react it with an oxidizing agent. So what happens is that alcohol, specific alcohol, changes into a carboxylic. It changes into carboxylic acid. Okay, that's the simple reaction. Alcohol changes into carboxylic acid. If you add an oxidizing agent is the substance that oxidizes another substance. So, number one, what are your oxidizing agents? There are two oxidizing agents. One is called potassium magnate 7. Here you have to remember them. So one of them is potassium magnate 7, which is KMnO4 plus reflux. That's condition number 1. रिफ्लक्स का मतलब मैं समझा देता हूँ, अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ. प्रॉब्ली कुछ लोगों को शायद पता भी हो, लेकिन I'll just explain what reflux is. अच्छा, the other one is potassium dichromate 6. ठीक है, that's potassium dichromate 6 plus reflux. So this is K2Cr2O7. ठीक है, they're two oxidizing agents. ठीक है, दोनों के नाम you have to remember their names, and not only their names, but you also have to remember their color changes as well. Because these are the two main questions that will be asked. One is what is the name of the oxidizing agent? So you're going to write one of the two. ठीक है, either potassium magnate 7 or potassium dichromate 6. And the other one is about color change. So let's talk about the color change as well. So both of these are oxidizing agents? हाँ, मतलब you can either use number 1 or number 2. ठीक है, for this case. अच्छा, दोनों केसेस में कलर चेंजेस भी याद रखनी है. पोटेशियम मैग्नेट, ये जो मैंने शीट नहीं दी हुई एक जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई, उसके अंदर इनके कलर चेंजेस वगैरह आर मेंशन्ड. अच्छा, दिस वन इज पर्पल टू कलरलेस. ठीक है, सो रिमेंबर द कलर चेंज. पोटेशियम मैग्नेट 7 इज पर्पल, but when it reacts, it changes to colorless. Okay, so that is the color change that's going to happen in this reaction. Second reaction, the color changes. Potassium dichromate 6 is orange, and when it reacts, it changes to green. So both color changes, they need to be remembered as well. Okay, that's it. The first thing, alcohol को oxidize करो, it changes into carboxylic acid. और ऑक्साइजिंग एजेंट कौन से यूज करने, either one or either two. ठीक है, and you need to know the color changes. अच्छा, बाकी रिएक्शन जो है alcohol changing into carboxylic acid, that reaction is, let's pick any alcohol, let's pick propanol for a second.
So propanol is 3 carbon atoms and prop is 3 carbon atoms. So propanol is 3 carbon atoms and beach में there's an OH somewhere, ठीक है? So I put an OH at the end. इसको जब आप ऑक्साइज करोगे ना, अच्छा remember your equation में the oxidizing agent is just referred to as O in square brackets. ठीक है, मतलब you're not going to write KMnO4 or K2Cr2O7. If you write the entire equation is quite complicated, ठीक है, you can't remember the entire equation, तो उसको simplify उन्होंने किया हुआ है. This is your oxidizing agent. It's only referred to as O, but in square brackets, ठीक है. So it could be K2Cr27 or it could be KMnO4. अच्छा product क्या होगा? Product ये होगा. What's reflux? अच्छा वो मैं explain करता हूँ. चलो इसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है. ये मैं पहले ये मैं explain कर दूँ equation. अच्छा this carbon atom over here. Nothing happens to the rest of the molecule. बस वो जो alcohol वाला जो carbon atom है ना, only that one, that changes to carboxylic acid. But the rest of the molecules remains exactly the same. It's still 3 carbon atoms. ठीक है. बस वो जो alcohol वाला carbon atom नहीं था end वाला, ठीक है, that would change into carboxylic acid. Carboxylic acid क्या होता है? It changes into double bond O and OH. And the rest of the molecule pretty much remains exactly the same. You still have 3 carbon atoms and they're still connected to hydrogens. It's only this OH wala jo carbon atom hai that changes into carboxylic acid. ठीक है, तो instead of being an alcohol, it changes into a carboxylic acid. तो याद करना भी आसान है कि if it's propanol, तो दूसरी साइड पे क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड. Plus another thing would be produced and that is going to be water. So to complete the equation, make sure you write water as well. That's your overall complete equation. ठीक है, so if it's बस ये O बीच में डालना है और दूसरी साइड पे water ऐड करना है. Any alcohol it just changes into carboxylic acid. That's it. इसको बैलेंस कर लेना कि अच्छा why is this oxidation? Reason it's oxidation is कि पहले इस molecule में there was only one oxygen. But after this reaction, this molecule now has 2 oxygens. So there's an addition of oxygen that's taking place. So that's one thing, addition of. So addition of oxygen is happening. And not only addition of oxygen, but also reduction of, removal of hydrogen as well. This one had how many hydrogens? I think it had a total of 8 hydrogens. But if you look at this molecule, it has a total of 6 hydrogens. So there's removal of hydrogen also happening. So both were basically signs of oxidation happening. ये हमने कहीं start में लिखा था कि oxidation is gain of oxygen and also loss of hydrogen. So both of the things are happening in this reaction. So this is your overall equation. You need to balance this equation. So how would you balance this? There are 2 oxygens and 1 oxygen over here. So total of 3 oxygens. So यहाँ पे there's only 1 oxygen, so there should be 2 oxygens over here. Now this equation looks balanced. So any alcohol, ठीक है, let's do another reaction. Let's say I have methanol. या ethanol कर लेते हैं. 2 carbon atoms. And there is OH and the rest are all hydrogens. ठीक है, each carbon forming 4 bonds. अच्छा, so this is ethanol. इसको oxidize करना है. Put O oxidizing agent in square brackets. And the product is going to be, इसको नीचे करना है. अच्छा, and the product is going to be कि this carbon atom जिसको मैं मार्क करूं, OH वाला carbon atom, this would change into carboxylic acid. That's it. So उधर जाके it's 2 carbon atoms, but this carbon atom over here changes into carboxylic acid. Plus
water molecule. And again, you have to balance the oxygens. So there are 3 oxygens over here in total, okay, water, and 2 over here. So there should be 3 oxygens over here. 1 is already in ethanol, this one. So there would be 2 over here, and this equation is balanced. So ethanol changes into ethanoic acid. That's it. So a simple reaction है, propanol होगा propanoic acid बन जाएगा, ethanol होगा, it changes into ethanoic acid. If it's methanol, it changes into methanoic acid. तो बस वो carbon वाला जो OH है ना, that changes into carboxylic acid. That's it. So the equation is pretty simple, and you just have to remember these 2 oxidizing agents. You do O bracket में डाला मैंने ये, this one. You just have to remember okay, what is this? This is either KMnO4 or it's K2Cr2O7, and you reflux. खैर वो पहले तो बता दो रिफ्लक्स के ऊपर बात है. व्हाट इज रिफ्लक्स? ये पहले बता दो. क्लियर है? ये मैरिज क्लियर है, चेजीन क्लियर है, एमन क्लियर है, बाकी सारे भी जी सर. अच्छा, तो कोई खास याद नहीं करना, 2-3 चीजें बस याद कर लो. रिफ्लक्स क्या होता है? रिफ्लक्स इज बेसिकली heating volatile substances. Volatile substances are those substances that evaporate very easily. So heating volatile substances with a condenser on top. So that they don't evaporate. So that they don't evaporate. Alcohols का पता होगा कि alcohols को अगर वो perfumes के अंदर होता है, hand sanitizers में होता है, कि as soon as you rub it on your skin, it evaporates very, very quickly. So it's a very volatile substance. तो अब इसमें हीट करना है. अब मसला है हीट कैसा करोगे कि अगर if you take a container and if you, मैं एक रफ सा वो बना लेता हूँ. अच्छा, so I have this container and I want to heat it. ठीक है, ये वो volumetric flask या round bottom flask है, ठीक है. So I put in the alcohol, let's say ethanol है. It evaporates very quickly. Plus oxidizing agent, let's say I put in KMnO4. Now the reaction would not start until I heat it. Okay, so I start applying heat. I put a Bunsen burner underneath it and I start heating it. Masla ye hoga ki before ethanol could react with KMnO4, most of the ethanol would just evaporate and escape from the top. So the reaction would not happen because ethanol to reaction start hone se pehle hi evaporate kar jayega. Even if you put it in the container, so half of the alcohol would have already evaporated. So to prevent evaporation, what is done is that iske top ke upar na you add these condensers. ठीक है, a Liebig condenser is added, and let's say this is the in and the out. So out ऊपर वाला है. So there's cold water coming in. ठीक है, so cold water is coming in and it's filling up this water jacket, this Liebig condenser, and it comes out from the other end. इसका बस फायदा ये कि if let's say even before the reaction heating करोगे तो फिर तो सारा का सारा ethanol evaporate ही कर रहा होगा. So if particles they start to evaporate, so they're going to reach this cold place where they're going to condense back again. So they won't be able to escape. As soon as they evaporate, नीचे heat कर रहे हो, ऊपर cold रखा हुआ है. तो वो जैसा वो स्टीम होता है ना कि आप पानी बॉईल कर रहे हो तो उसके ऊपर हाथ रखो ना तो इमीडिएटली क्या होता है वो हाथ के ऊपर ना यू स्टार्ट गेटिंग दीस वाटर ड्रॉपलेट्स, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है. सो जस्ट इमेजिन कि you don't want ethanol to evaporate, but you want to heat it as well at the same time. If you don't heat it, the reaction would not start. So you heat it, but you keep the top
really, really cold by putting a condenser, a Liebig condenser over there. So or any condenser, ठीक है, on top, and that prevents anything from escaping the container. ठीक है, ये clear है? Is this clear? सारों को मालूम है? ठीक है. तो just remember reflux का जो word आएगा ना, reflux means nothing except मतलब reflux जब भी कोई कहता है reflux, it just means you are heating it. लेकिन because the substance is so volatile that you have to heat it very very carefully by using a condenser at the opening. ठीक है, सारों clear? किसे question पूछा था? मैंने sir. बस ठीक है. अच्छा, so this is oxidation of alcohols. Now we can move to alcohols खत्म हो गया, ठीक है. Now we can move to carboxylic acids. That's बस ये बिल्कुल end वाले topics ही हैं. अच्छा, we can move to carboxylic acids और carboxylic acids में के अच्छा, carboxylic acids. This is the last topic. These are basically acids. पहले तो quick revision. होते क्या थे? It's basically a carbon chain. So a bunch of carbon atoms bonded to a functional group. Carbon chain को alkyl chain कहते हैं, ठीक है? Plus, what is the functional group? C double bond O and OH. This has to be together. There should be a carbon atom which should be bonded to C double bond, which should be making a double bond with oxygen, and it should be bonded to OH as well at the same time. So that's the functional group. For example, if it's methanoic acid, meth means one carbon atom, so that's simply one carbon atom. तो one carbon atom में there would be double bond O and OH. और फिर लेकिन इस कार्बन के ना bonds complete नहीं है. It is making 3 bonds, so add in hydrogen. So that's methanoic acid. If it's propanoic acid, so what's now what is propanoic acid? Propanoic acid is prop is 3 carbon. Exactly. और फंक्शनल ग्रुप डाल दो, डबल बॉन्ड O and OH, और बाकी बॉन्ड्स में H फिल कर दो. कार्बन वुड बी इधर 2H होंगे, तो either write it as CH2 या फिर सारे बॉन्ड शो कर दो, and this is 3 hydrogens. ठीक है, तो hopefully clear है. Every carboxylic acid has this functional group, and इसका जो जनरल फॉर्मूला है, अच्छा, it has फंक्शनल ग्रुप को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं. क्या चीज? नहीं, क्वेश्चन क्या था? हेलो, फंक्शनल ग्रुप को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं एंड में या फर्स्ट हाँ, वाले वो आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो. जिस तरह हमने एल्कीन और उसमें क्या था ना, पोजीशन आप बताते हो ना. जैसा ये OH वाला नहीं है, इसको आप कहीं भी, जब हम इसकी नेमिंग कर रहे थे ना, कहीं हमने इसकी शुरू में नेमिंग की होगी, तो ये तो खैर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया था. खैर हमने when we were talking about alcohols, तो OH ग्रुप की भी पोजीशन वो आप मेंशन करते हो मॉलिक्यूल में. एल्कीन्स में जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसकी भी पोजीशन मेंशन करते हो. जैसा ब्यूट 2 होता है, ठीक है, तो 2 जो होता है ना, दैट्स द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. अच्छा, इन दिस केस you actually don't have to mention the position, क्योंकि it's always at the end. ये बीच में नहीं आ सकता. मतलब बीच में आओ, अगर इसको रखोगे ना, तो बॉन्ड ही पूरे नहीं होंगे. लेट्स से कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप ना, ये बीच वाले कार्बन आटम के साथ कनेक्ट करो, तो क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड O and OH. अब खुद देख लो कार्बन के बॉन्ड्स कितने हो गए. If I add double bond O and OH to it, 5 हो गए. ठीक है, तो ये क्लियर है कि ये
कार्बोक्सिलिक एसिड की अच्छी बात है कि वो बीच में आ ही नहीं सकता, उसके बॉन्ड्स, कार्बन के बॉन्ड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. तो just remember carboxylic acids make जो functional group, it's always at the end. अच्छा, it could be at the start as well. खैर start और end is the same thing. मतलब इसी मॉलिक्यूल को ना अगर वो उठा के ना अगर आप उल्टा कर दो ना तो वो फंक्शनल ग्रुप पहले वाले के साथ अटैच्ड है। ठीक है, that the first and the end is basically the same, it's the same position. ठीक है, it's just the flipped version of the same molecule. Okay, this is propanoic acid. अच्छा, इसका वो करना था हमने general formula. General formula are, there are two general formulas. We're going to work with two. We'll talk about this one first. CaH2n plus 1 and COOH. Now that's one general formula. Okay, you don't have to actually draw the entire molecule. Just put N over there and you can figure out what the formula is going to be. अच्छा, N इसमें ये याद रखना कि N is not the number of carbon atoms. N is one less than the number of carbon atoms. तो number of carbon atoms minus 1 होता है। वो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि अगर एक मॉलिक्यूल में ना 10 कार्बन एटम्स है ना, तो ये COH ग्रुप इज 1 कार्बन एटम, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? यू लेफ्ट विद 9 कार्बन एटम्स। तो N की वैल्यू जो होगी ना वो 9 होगी। तो अगर if a carboxylic acid has 5 carbon atoms, तो एक तो इधर ही आ गया carboxylic acid group में, तो you're left with 4। तो इसलिए ना वो number of carbon atoms -1 है N। तो फॉर एग्जाम्पल ये प्रोपनोइक एसिड है, मैं आई यूज प्रोपनोइक में कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 है। तो N की जो वैल्यू होगी ना, that is going to be taken as 2. Now I'm going to use the general formula. इधर तो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना, I'm going to use the general formula. General formula क्या कहेगा? It would say C2 और H कितना होगा? 2 into 2 plus 1. ठीक है, यहाँ पे N की वैल्यू 2 डालो तो 2 into 2 plus 1, so it comes out to be 5. और फिर COOH. So this is your propanoic acid formula, मतलब उसकी condensed version. इन दोनों को देख लो, ये exactly these two are exactly the same. ये शुरू में क्या है? 2 कार्बन्स है और कितने हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन है। तो that is your C2H5. ठीक है, ये कार्बन चेन को देखो, it's 2 carbons and 5 hydrogens. और फिर ये क्या है? COOH. So that is COOH. So if you use the general formula, you can directly figure out the formula of the carboxylic acid. Methanoic acid का भी इसी तरह कर सकते हैं। Methanoic acid has 1 carbon atom, तो N की वैल्यू क्या लेनी है? उसमें से -1 करो, 0 लेनी है। तो कार्बन कितने होंगे? 0। तो H कितने होंगे? 0 into 2 0 plus 1, तो H1 होगा और फिर COOH। तो इसको भी देख लो, ये एग्जैक्टली सेम है। It's H एक है और फिर COOH. So this is what I'm getting from the general formula. So you can always use the general formula to figure out the molecule and its formula. This is carboxylic acid. सबसे पहले इसकी properties, physical properties. ऐसा physical properties में कि like alcohols, they have usually high melting points and boiling points. ठीक है, alcohols भी liquids होते थे ना, ये ethanol वगैरह, they were all liquids, they were not gases. So they have kind of relatively high melting and boiling points. जो हमने पहले पढ़ा है, which increase with size. जितना बड़ा molecule होगा ना, उतना higher उसका melting and boiling point होगा. So which increase with size of molecule. So high melting and boiling points. Next point. They are soluble in water, not in oil. ठीक है, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जांपल्स कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की
क्या क्या एग्जांपल्स हैं आपके पास? इस जितने भी है ना, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, और भी जगहों पे ये सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑर्गेनिक ये जो फ्रूट्स वगैरह दैट यू ईट, दे कंटेन लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। एंड मतलब वो आपको पता है कि लेमन जूस इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, दैट इज citric acid. Even vinegar is soluble in water. So this soluble but not soluble in oil. अच्छा, नंबर 3 जो कि पॉइंट है जो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 इज दे आर वीक एसिड्स। अच्छा, दे आर वीक एसिड्स, वेरी वीक एसिड्स, मतलब यू कैन टेस्ट लेमन, बस आप थोड़ी देर के लिए शक्ल बनाओगे, उससे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट उसका कुछ नहीं होता। तो सो मतलब सावर टेस्ट होता है, दैट्स ट्रू फॉर देम। सो दे आर वीक एसिड्स एंड बाकी वीक एसिड्स से ना फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर तो क्वेश्चन कोई नहीं है बाकी जो हमने पढ़ा। No, sir. चलिए ठीक है, ये फिर हम ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली काफी चीजें कंप्लीट भी हो जाएंगी तब तक, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके देन मेक श्योर के यू राइट योर प्रेजेंट यहाँ पर साइड पे। Okay, sir. Allah Hafiz. ओके, Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir.